Hello students, welcome to my channel, and we were discussing is matter around us pure, and this subtopic was concentration. What is the concentration of the solution, and what do you mean by concentration of the solution, whether a solution is concentrated or not, whether the solution concentrated or dilute, right? The term concentration and dilute has to be focused. So taking the example, and we are having two methods, mass by mass percentage and mass by volume percentage, right? The solution may be m by m means mass by mass और m by v. इसका मतलब जरा समझो, मास बाई मास का मतलब हुआ आपने जितना सॉल्यूशन बनाया है, राइट? सपोज करो आपने 100 ग्राम का सॉल्यूशन बनाया है, उसमें कितने ग्राम सॉल्यूट है, समझ गए ना? जो कम अमाउंट है, लेसर अमाउंट इज द सॉल्यूट एंड मोर अमाउंट इज द सॉल्वेंट. तो 100 ग्राम सोल्यूशन है, सपोज करें, मास बाई मास बोला ना, तो 100 ग्राम सोल्यूशन में सपोज करो 25 ग्राम क्या है तुम्हारा सॉल्यूट हुआ, तो क्या हुआ 25/100, तो मास बाई मास. अब अगर आप कह रहे हैं 100 ml सोल्यूशन है और 25 ग्राम क्या है सॉल्यूट है, तो क्या बोल दिया m/100 ml, राइट? तो दिस इज मास, दिस इज वॉल्यूम, दिस इज मास, दिस इज मास. तो मास बाई मास, mass by volume. This technique or this concentration term is being used in medicines. You can see the wrapper and the wrapper of the syrup. You can see there is written mass by mass and mass by volume percentage of the component of the medicine, mean the ingredients. What mass by mass percentage and mass by volume percentage of a solution mean? Let's look at situations where these concepts can be applied. A solution contains 20 grams of sodium carbonate in 240 grams of water. You need to calculate the weight percentage of the solution. In the given problem, the weight of the solute, sodium carbonate, is 20 grams. Pause the video and write down the question. A solution contains 20 gram of solute, हमारे पास solute हुआ 20 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट इन 240 ग्राम ऑफ वाटर. तो सी, यहाँ पे दो चीज़ें आपको मिल गई. अभी मैंने आपको बताया था परसेंटेज आपको बताना है ना? अभी मैंने बताया सोडियम कार्बोनेट कितना ग्राम 20 ग्राम, जो कम अमाउंट है कितना है सोडियम कार्बोनेट हुआ. तो एक बात तो क्लियर हो गई, दिस Na2CO3 इज द सोडियम कार्बोनेट. कितने ग्राम है 20 ग्राम. ये सॉल्यूट हो गया. क्यों हमने जाना है सॉल्यूट ही है, क्योंकि ये कम अमाउंट है 20 ग्राम है, जबकि आपने वाटर कितना लिया 240 ग्राम, राइट? वाटर कितना अमाउंट है, वाटर अमाउंट है 240 ग्राम. तो अंडरस्टूड हुआ 240 ग्राम जो ज़्यादा है वो सॉल्वेंट है, पूरा मिला के क्या बन जाएगा सॉल्यूशन. तो कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द वेट परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन. वेरी इजी क्वेश्चन. 240 + 20, राइट? टोटल अमाउंट तो हो जाएगा ना. अब आपको बताना है 240 + 20 सोल्यूशन हो जाएगा, तो कितना परसेंटेज हुआ किसका, कैलकुलेट द वेट परसेंट ऑफ द सोल्यूशन. क्लियर? तो वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, इंटायर सोल्यूशन जो हो जाएगा इनटू 100. क्लियर? इंटायर सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, देखेंगे पूरा कंसेप्ट. सोल्यूशन देखें. The weight of the solvent, that is water, is 240 grams. We know that the weight of the solution is the sum of the weights of the solute and the दोनों solvent. का ऐड कर देंगे, सोल्यूशन हो जाएगा. Let's use this formula to solve the problem. पहला फॉर्मूला क्या था, m/m × 100. The weight of the solute is 20 grams and the weight of the solvent is 240 grams. Therefore, the weight of the solution is equal to 260 grams. 260 grams हो गया. We know that weight percentage is equal to the weight of the solute divided by the weight of the solution multiplied by 100. टर्म याद रखेंगे, पूरा सोल्यूशन बोला है, सॉल्वेंट नहीं बोला. तो अगर पूरा सोल्यूशन बोला है तो क्या करेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है, यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्यूट 20 है, सोल्यूशन कितना है 260 है, 240 नहीं 260 लेंगे यहाँ पर, राइट? जब 260 लिया तो पूरा कंसेप्ट निकल आएगा. सॉल्यूशन का वेट हुआ इनटू 100. क्लियर? अब सॉल्व करें. Therefore, we substitute the values of the weights of the solute and the solution in the formula. Hence, the weight percentage of the solution is 8.33%. Let's try out another example. 15 milliliters of hexane is mixed with 45 milliliters of benzene.
you want to calculate the volume percentage of the solution. In this problem, the volume of the solute, hexane, is 15 milliliters and the volume of the solvent, benzene, is 45 milliliters. The total volume of the solution is equal to the sum of the volumes of the solute and the solvent. The volume of the solute is 15 milliliters and the volume of the solvent is 45 milliliters. Adding both the volumes, you get the total volume of the solution equal to 60 milliliters. We know that the volume percentage is equal to the volume of the solute divided by the volume of the solution multiplied by 100. Therefore, the volume percentage of the solution is given by dividing 15 milliliters by the total volume of the solution, that is 60 into 100. Hence, the volume percentage of the solution is 25%. 25%. Is it? Now, the term is saturated and unsaturated solution. What does it mean? This is fun and so simple. Let me add more salt. So my friend is trying to make the solution, right? He is continuously trying to add more and more salt in water, correct? Now, what he sees? He sees at a certain point, continuously by adding salt and more salt, and again salt and salt. Continuously is adding salt. At a point, what he sees there is dissolution of salt stops and he sees the crystals of salt. That means now the solution is being saturated. Until the salt is being dissolved and there is no particle of the salt in the water, that is called unsaturated, right? And when the salt stops to dissolve, this is called unsaturated solution. Means now it is being saturated actually. Saturation and unsaturation. सपोज करें आपने खूब खाना खा लिया, अभी आप भूखे हैं, आपको बहुत तेज भूख लगी, तो क्या कहते हैं आप? अभी कहते हैं आप कहोगे अभी आप अनसैचुरेट हैं, राइट? जैसे भूख बहुत लगती है, आप खाना खा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, उसके बाद एक टाइम आएगा जब आप कहोगे नाउ दैट्स इनफ, आई एम बीइंग सैचुरेटेड. दैट मीन्स जब डिसोल्यूशन स्टॉप हो जाए तो क्या बोलते हैं उसको? सैचुरेट हो जाता है. देखें पॉइंट. I must have messed up again. The salt is not dissolving anymore. Even if you stir the solution vigorously or wait for a long time, the solution will remain undissolved. You have obtained a saturated solution in which no more solute will dissolve. The solution that we had obtained initially was an unsaturated solution. Now heat the saturated solution. The undissolved solute present in the saturated solution slowly dissolves as the temperature rises. After the solute has dissolved completely, slowly cool the resultant solution to room temperature without disturbing it. The solute, which was undissolved before heating, has now dissolved. तो एक टर्म आपने देखा यहाँ पर, जो सॉल्ट अभी तक सैचुरेट हो चुका था, जो सोल्यूशन सैचुरेटेड था, मतलब उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्ट मिला नहीं सकते थे, अब समझ गए? अभी क्या हीट देने के बाद वो क्या वापस क्या हो गया? डिसॉल्व हो गया. यानी कि हीट की वजह से जो अनसैचुरेटेड जो सैचुरेटेड सॉल्यूशंस होते हैं उनको वापस अनसैचुरेटेड बनाया जा सकता है. हीट देने से क्या हुआ? उसकी भी एनर्जी बढ़ गई, ठीक है ना? उसके कॉम्बिनेशंस और बढ़ गए, यानी कि उसका सॉल्यूशंस से ज़्यादा डिसोल्यूशन होने लगा. फिर This means that the solute dissolved in the present solution is more than its solubility. The type of solution that we just discussed is called a supersaturated solution. In this solution, the solute present is more than in the saturated solution. Even a slight disturbance will make the solute precipitate out and you will be left with a saturated solution. Therefore, we can classify a solution as saturated
and unsaturated, or supersaturated, depending on the amount of solute present in the solution. Okay,